saprophytic fungi are fungi that obtains nutrients by decomposing dead organic matter. डेड ऑर्गेनिक मैटर ना एक्टिंग एज में ना बोला जान रहे एक्टिंग एज नेचर्स प्राइमरी रिसाइकलर्स बाई हले ना रिसाइकलर्स by breaking down dead plants and animals into simpler substances, essential nutrients for nutrient cycling in ecosystems. The secret digestive enzymes onto the decaying material. Then absorb the broken down nutrients and preventing waste build up. इसके बाद फिर क्या preventing waste build up है ना, preventing waste build up and making materials available for other organisms. ठीक ना. Example includes many common mushroom molds like asparagus and penicillium. Key characteristics or roles. ठीक ना. Nutrients equations. They feed on dead decaying organic substances. Saprom means protein and phyto means plant organic. इसके बाद फिर decomposers. They are crucial decomposers, breaking down complex materials like cellulose and lignin for dead wood and slabs. ठीक है. इसके बाद फिर क्या बोलते हैं से न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बाय रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बाय कार्बन नाइट्रोजन से फॉस्फोरस लेना कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस इन द सॉइल्स. they supports plants grow and ecosystem health. बाद फिर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस they are prevents accumulations, they are prevents accumulations dead on organic matters, dead on organic matter. ठीक है. Dead on organic matter and the form of the foundation for availability nutrients for food webs. Nutrients availability food webs. ठीक है. इसके बाद फिर एग्जाम्पल्स मशरूम्स many familiar mushrooms like Marassaceae tremates are saprophytic decomposing wood and slabs. Molds Rhizopus, asparagus and penicillium are common saprophytic molds. इसके बाद फिर क्या बोलते हैं not only fungi are saprophytic. ठीक है ना. Fungi can also be parasitic, living in host Puccinia, और कैसे हले
और symbiotic mutual or symbiotic mutual defect mutual defect lesions with algae. Answer complete.